long deliberated date, and we finally made it. It's been one of my most marathon prize distribution. I normally take it and I get it sliced down. But today I didn't. The reason is because of my batchmate, Amarjot Gill. My friend, because of him. I'm here because of him. We go back to 1972 when we both trained together in the Mount Abu, particularly in the Indian Police Trail. And I was one of them. You were a batch of 70 men, and he was the tallest in the batch. And I was the shortest. But I am here because it was on his invitation, and you have to say yes to a school friend. So this is how, and we kept looking at what are the date options we have. So therefore, thank you, Amarjot, for showing me that, and I'm so happy to know that he's also part of the Board of Governors, which I felt very good that here he is performing a higher role. So friends, Board of Governors is a very, very illustrious board, full of army generals, armed forces, disciplined forces. So, and very, very great. So the YPS Board of Governors, headmaster, your principal headmaster, members of the faculty, parents cheering and jeering and liking and congratulating, students clapping for the trophies the others won, and you will be aspiring to win, and friends. I've given this event a good, reasonable thought. I worked on it. Normally I do. I normally do this, what would be relevant here? And I searched and I searched and I said, I saw that this is one of the best outstanding schools of the country. And obviously it's educating them to the best professional degrees which you will get. And you'll make it professionally, certainly, there's no doubt about it. I don't have to say, do this to make it here, because the school is going to make you do it. Parents will make you do it, and the whole curriculum will, and the kind of activities you're doing, Amarjot and I were discussing, हम तो ऐसे ही पल गए. हमने तो इनमें से एक भी एक्टिविटी नहीं की थी. हम तो सिर्फ कहना मानते ही ऐसा बड़े हो गए. माँ बाप का कहना माना, टीचर्स का कहना माना, कहना मानते मानते कोई भी एक्टिविटी नहीं जो आपने दिखाई. Your headmaster showed the activities, amazing activities, remarkable all-rounders in every way. Every child gets an opportunity to follow the hobby or the activity which he or she wants to. None of this was in our schools, and we were also considered the best schools of the city, wherever I studied. I did my schooling in Amritsar Sacred Heart, and we had none. An occasional basketball, that's it, nothing else. NCC bhi sawal nahi uthti thi. So it was a different world when we grew up, but we grew up with something more. And that's what came back to me. While we all made best of whatever we could, listening to our disciplined life, obedient life, trusting life, where we trusted our families and parents, whatever guidance, trusted our teachers when whatever they said to us, and the trust has got us through. Trusting even in the police academy, whatever the teachers taught us. Not literally unquestioning. We literally led an unquestioning, trusting lives. And trusting also in very highly value-based. Very, very value-based. Our lives were less a profession, but more of values. That's how when I looked back. So when I looked at your school and I said, what have I to tell you? You were going to be as brilliant as you choose to be. Because the quality of skill, the training, academics, excellence, etc., is there for you. The exposure is there for you. But it all depends on now a partnership between parent, teachers, and the student. And the greater the partnership,
greater the result. Whereas ours was not a partnership. Ours was not a partnership. Ours was just teacher, the school homework, classwork, and sometimes parents didn't even know what we were being studied, and we did our homework on our own. But there was a very strong streak of moral science. Moral science is very strong. It appears to have thinned out completely. So as I was working on as to what is that I feel we can give as add-on to whatever you're doing. And by the way, this is an area which is needing to be addressed seriously with our coming generations. And we see what's happening. The young, the middle, and the old. And what a gap which has come between the higher senior age, the middle age, and there's a total conflict today. Almost conflict. We're trying to understand each other, and we are wondering, where do we meet? Who's going to listen to? So I thought I'll share with you begin with a little film I have for you. I was looking at, I'm a researcher by nature, and I keep reading, writing, viewing, make my own library, because I reach out to students a lot by habit. I'm a teacher at heart. Finished my master's, I started to teach as a lecturer in Khalsa College for Women, Amritsar. Taught for 2 years and sat for the IPS. Whilst being in service, I did a law degree. While in service, I did a PhD. While in service, I did a postdoctoral fellowship and wrote a book. So I've been a student, but practicing whatever work came my way. But I was a student and practicing police officer, whatever roles I got. So therefore, I have a very big library of my own from day one. And even the prizes I got, those little certificates, they're also with me. That's why I was telling these juniors, ये certificate संभाल के रखना, बड़ा काम आएगा. बहुत आनंद आएगा इसको देख के. So I know I've kept those little ones, the books, presents I give. So I have something for you. I'm going to begin with this film, friends. Have a look at this film. It's not left me ever since I saw this documentary. And then I'll come back to you as to what I have for you based on this film. Let's look at this film together. Carry on. And today's topic is education the same as schooling? Send us your opinion. That's a funny question. Of course, education means going to school. That's why they call it getting an education. I don't agree. You don't? No, sir. My mother never went to university, but she's one of the wisest people I know. Wisdom isn't education. Sir, may I ask a question? Go ahead. If someone never attended school, but can build a house, repair machines, employ people, is that person uneducated? Education begins with school. No. Schooling begins in school. Education begins from birth. How can education begin before school? Before schooling was introduced here, who taught farming? Who taught blacksmithing? Who taught midwifery? Who taught hunting? Who taught pottery? Who taught weaving? Who taught our people how to build houses? Who taught them how to govern kingdoms? Were they uneducated just because they had no certificates? Those are values. Education is academic achievement, degrees, certificates, research, knowledge. Without school, there is no education. Sir, can knowledge exist outside classrooms? That is not real education.
The tire burst damaged part of the steering system. We can't move. Young man, leave that engine. Professionals are talking. I'm only trying to help. Did you study mechanical engineering? No, sir. Then leave it. Young man, please go back and check the engine. Where did you study? My father's workshop, then apprenticeship, then experience. Every day I still learn. No university? No, sir. Professor, can we continue the discussion? Please do. You said education only exists inside schools. If that's true, why are we moving now? I didn't go to university, but every day I study engines. Every broken vehicle teaches me. Every mistake teaches me. Every customer teaches me. Is that not education? Today, I have learned something. Schooling is one way to become educated. But education itself is a lifelong process of acquiring knowledge, developing skills, building character, and solving problems. Young man, today you became my teacher, and tomorrow you may become mine. Because there are things you know that I don't. Education never ends, whether in a classroom, a workshop, a farm, an office, or on a broken down bus. Many people mistake schooling for education. Schooling is a system. Education is a lifelong process. Schooling happens inside classrooms. Education happens anywhere learning takes place. Schooling gives knowledge. Education gives ability. Schooling teaches subjects. Education teaches life. A certificate proves attendance. Your usefulness proves education. Education is demonstrated by your ability to think, adapt, solve problems, and continue learning wherever life takes you. A society needs professors and plumbers, doctors and farmers, engineers and electricians, teachers and tailors. When knowledge and skill respect one another, everyone moves forward, just like that bus. कुछ बचा इसको देखने के बाद कुछ बचा बताने के लिए बचा हाँ या नहीं कुछ बचा हाँ या नहीं नहीं बचा हम लोग यही थे इसलिए अपनी जीवन को संभाल सके और दूसरों का अभी भी संभालते हैं So I have now an offer, and the offer is a 4-pillar strategy. How do we carry this thought forward? And the 4-pillar strategy, friends, first pillar is, this is 4-pillar strategy is to build good human beings who become great professionals. Professionals so ye ban rahe hain, but to build good human beings who become great professionals. Because the purpose of education is not only to make successful living, but to live a life of significance. And that's what happens. Many of us are leading a life of significance. Your age of school and my age is the same. You're 77, right? I'm also 77. We are 77. Until every day I try and lead a life of
significance, that I'm of value to somebody else. This is what we have to move towards, but I'll take it. Now, let me say, I told you 4-pillar strategy. My first pillar is the school's responsibility. Principal, sir. Building the environment which you're working on. You have to create a culture where excellence and values go together. And each pillar, I'm going to identify 3 areas to focus on. 3, there are many, but I chosen 3. As far as the pillar 1, which is school responsibility, is put character before marks. Put character before marks. Start rewarding character. Very good charactered boy, very good charactered girl, very helpful, very polite, very honest, very truthful. Usko inam dijiye. So number 1, put character before marks. So that means more trophies which are character focused. So we start bringing back character which is missing. Second, build leadership through responsibility. Giving them tasks of responsibility. So what are the areas of responsibility you give to each child and reward them for that area of responsibility? Because that's what is lifelong. Now we are on lifelong learning, which will go beyond the subjects, but have made them a professional. They made them an engineer or scientist or doctor, whatever you want, plumber or whatever, engineer, whatever you want. So second, I'm only giving you 3. Third, celebrate honesty as much as achievement. So it must come center stage. So everybody starts looking at, did I do what act of honesty? Who did what? Very truthful. मैं गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलते, gossip नहीं करते. So this is, I'm only giving you 3. So the school should itself ask itself every day, are we preparing children for the next examination or for the next 50 years? And what are we doing in our schools? We're preparing them for the next examination. But if your pillar has to do, then this is in the area is, we are preparing for next 50 years. Because we're all going to be living beyond that. And what is going to happen? Preparing them for the next 50 years, what's going to happen? Internationally, climate-wise, financially, economically, political leadership-wise, whatever, as a country, for 50 years. That's the preparation. Alongside, how do we dovetail this now? That's a challenge in our class. How does each teacher pick this up, preparing the children for the next 50 years, and they should all start looking at my next 50 years. You told me about one child who told me the child has an ambition to set up college and universities. He's already preparing for next 50 years. He is. That means we work with him and develop him to such an extent that he does achieve it. All of them should be next 50 years. The blog writer, the musician, the athlete, the sportsman, now preparing for 50 years. Many of them, I ask them, you're so tall, you're also got these, will you join the armed forces or join the police services? That means help them give a clarity for next 50 years. So start looking at discussing what is the time of discussion. So we'll come to think how. So this is school responsibility. Sir, I'm only giving you 3 points. So you ask yourself, now pillar 2. Pillar 2 is for teachers. And here are my 3 points. You are building the child. Children learn more from who teachers are rather than what they teach. So teachers should become the 3 points which for me. Number 1, role models. Secondly, listeners. And third is encouragers. So which teacher is being the best role model? Let them select. Point out, which teacher is your role model? Do an anonymous survey. Have a vote. Vote for your role model teacher. Who out of the teachers is a role model?
Not teacher who gets the maximum house trophies, but the role model. Secondly, who is the best listener out of teach? That teacher had all the time to listen to me, stayed back to help me out to listen and find a solution to me, Bob. To me, this is teaching. And third is encouraging. Who is the best encourager? That means we could have trophies now for these areas: the role model teacher, the listener teacher, and the encourager teacher. Teach children to do what? Number one, reflect. When do they reflect? So reflect, respect, persevere. Look at the kind of generation which we have who are speaking foul languages against elders, and their cases are being registered. Well, why has it come to this? Did they not have teachers? Did they not have schools? Did they not have parents? What went wrong? Because we never had role models. We are looking for role models who are dead or gone. Teacher is your role model. I'm coming to parents also, friends. So these are the three areas. Reflect is time for reflection. When do we give them time to reflect? And reflect for what? Reflect how? And listen to whom when you're reflecting? We were taught. This is an area we taught. Our grandparents taught us. And it worked. Life of reflection. That means a constant life of self-audit on a daily basis. Daily basis. Those of us who remained honest, like Amarjot Gill, who've remained honest in our services, are reflectors, personal auditors, who reflected that this is not for me. I'm here for a higher purpose. That's why we've earned our livelihood in a simpler, but a more credible way. That's why you have a following. Otherwise, why would you have a following? So friends, for teach children to reflect. How? That means literally a course in reflection, time for reflection. And teach respect, learn respect. Respect, come, enter this class, touch your feet. Have you touched your feet of your parents before coming, take their blessings? Before coming, did you meet your parents to say, मैं school जा रहा हूँ, college जा रहा हूँ, mama, blessing देना. पाँव छू के आओ, पाँव छू के आओ. पाँव छुओ टीचर के जब आओ अंदर. और क्लास जब खत्म होगी, thank you sir for teaching us this. कभी thank you बोला इन्होंने? Thank you भूल चुके. And perseverance is a very important. All right, how do we persevere? What is perseverance? How do we? So is it only on sports ground to persevere? But even in day-to-day living, what is perseverance? So we can ask each one, what is it the area you think you need to persevere? So here is teaching the children to reflect, even think, serve, even serve. You got a trophy in community service. What did they serve? Has all your children served? All of them? Why only 10%? Why not everybody? I, as a 13-year-old girl, was serving in hospitals in the Indo-Pakistan war in Amritsar. I served. I cleaned the floors of blood as a 13-year-old girl. I used to queue up. I worked in Red Cross with my mother. I served. It was parent as a teacher. So I think service for everybody. Compulsory service. Serve karo. Kisko? Apni dadi ko. दादी को दवाई दो, पाँव दबाओ, दाबी करके आओ, उनकी ध्यान रखो, उनको खाना खिला के आओ. It's service. So जरूरी नहीं है service is outside the home. Unless we bring the sense of service back, we will not have that. That's education to me. Professional नहीं, education. That's lifelong. Because वो तो lifelong रहेगी. एक दिन जो आप करोगे, आपका बेटा भी आपके लिए, बेटी भी करेगी. So third pillar, again 3 points. Third pillar for parents' responsibility is build the home. Parents are the child's first school. First school. Every home is the first school. Every mother and the father are the first teachers. And they think sending them to expensive schools that you can outsource it, finished. Whereas you remain the first school, first teacher at home. So children, you are the first school. This school comes after, as they very rightly said.
So what do children need as a first school from you as parents? They need time than gifts. Because we have money, चलो चलें मॉल चलें, ये खरीदे वो खरीदे, क्या चाहिए तुम्हें अच्छा, तो उसको उसी से खुश कर देते, वो भी खुश हो जाए, but it's very temporary. Children need time. How do you give time? When do you give time? Who gives time? And what quality time? Not that you're just sitting together while you are looking at your phone and he's looking at the book and say, "Mummy, मेरे बात, हाँ मेरी बात, मेरे बात खत्म करने देना, फिर बात करती हूँ." Rather than saying, "This is time for you, child." And child also knows, my parents, this time is mine. My mommy and daddy have put it for me. So time more than gifts. Second, conversations more than instructions. Conversations. आज स्कूल में क्या हुआ, दोस्ती में क्या हुआ, आज समाज में क्या हुआ, क्या कुछ तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्या लगता है, तुम्हें क्या सोचता है, वो अपनी दिल की बात करे. दैट मीन्स वो फ्रेंड बाहर नहीं ढूंढेगा, वो अपनी मम्मी डैडी को ही फ्रेंड बनाएगा. Conversations. So have conversations with the child is needed. Third, encouragement more than comparison. वो उसको इतने नंबर मिले, आज होना है. कई पेरेंट्स घर जाके बोलना है, उसको इतने प्राइजेस में, तू क्या कर रहा था, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा. एंड दैट्स फेटल. कई बच्चों को इनाम वो नहीं मिले जो इतने मिले, उसको ट्रॉफी नहीं मिली, तुझे क्यों नहीं ट्रॉफी मिली, तो इसके कहने से उसको ट्रॉफी मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगी. कहता मैं दिखाता हूं आपको ट्रॉफी देके, बड़े होके बदला दूंगा. नो, हैव कॉन्वर्सेशन, एंजॉय. आज की जो सेशन देखिए, से वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी, सब बच्चों को मिली, बहुत अच्छा है बेटे, आप मैंने बहुत एंजॉय किया. तो मम्मी मुझे नहीं मिली, आपको कुछ हुआ नहीं, नहीं बेटे आपका फंक्शन इतना था, कितनी एक्टिविटीज आप करते हो बेटे, हमने तो करी नहीं थी ऐसी. कितनी एक्टिविटीज करते हो, जो ज्यादा एक्टिव नहीं मम्मी, अगर मैं ज्यादा एक्टिविटीज में जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर मेरे नंबर कम आएंगे. कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिविटीज में एंजॉय करो, तुम बेटे जाओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो हर बच्चा हैरान हो जाएगा, हाँ बेटे आज आके मैंने देखा है इतनी एक्टिविटीज है, तुझे क्या अच्छा लगता है, मामा मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए क्लास एक्स्ट्रा लगेगी मेरी. कोई बात नहीं बेटे, जाओ एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, करो जो अच्छा लगता है वो करो. वो हैरान हो जाएगा. कॉन्वर्सेशंस, दीज आर कॉल्ड इनकरेजमेंट मोर देन कंपैरिजन. आज जाके कंपैरिजन की गलती मत कर देना. इसको आप दूर नहीं कर सकोगे, वो माफ नहीं करेगा, वो he or she will hold a grudge against you. मुझे बहुत अच्छा लगा, सब बच्चों को इनाम दिए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बेटा पता क्या अच्छा लगा, इतनी एक्टिविटीज तुम करते हो, और जो एक्टिविटी अच्छी लगती है डट के खेलो, जाके हेडमास्टर को बोलो, टीचर को बोलो, सर अब मुझे इसमें एनरोल करो. क्यों, मेरी मम्मी के साथ मेरी बात हुई थी, मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, मम्मी ने भी कहा कि ये तो तुझे अच्छा लगता है, तू नहीं करो करो. ये कंपटीशन नहीं है बेटे, ये तो लर्निंग है. तो this is, children need this. So parents should ask every evening, आपको क्या पूछना है, जैसे मैंने स्कूल को पूछा, कहा पूछो. Parents should ask every evening, did I listen today? क्या मैंने सुना. हाँ, आप बच्चे को कह सकते बेटे, और हम अगर बेटर कर सकते हैं तो, और तेरा मन क्या करता है, कौन सी चीज हम और अच्छा कर सकते हैं, अगर तेरा मन है. नहीं तो मुझे तो तसल्ली है, मैं बहुत खुश हूं, तेरा स्कूल बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो जहां इतनी सारा तुझे डेवलपमेंट मिल रही है, मेरी पूरी तसल्ली बेटे. आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज अच्छा हुआ मैंने फंक्शन अटेंड किया, मुझे पता चल गया मेरे बच्चे को कितनी एक्टिविटीज का मौका मिल रहा है. वो बच्चा उसके मूड चेंज ही हो जाएगा, ये क्या हुआ आज. बट दिस इज व्हाट द चाइल्ड नीड्स. डिड आई लिसन टुडे, डिड आई अप्रिशिएट द एफर्ट,
ये भी अपने आप से पूछो, डिड आई अप्रिशिएट द एफर्ट, डिड आई मॉडल द बिहेवियर आई एक्सपेक्ट? दीज आर द 3 क्वेश्चंस आई थॉट, और आई डिड आई encourage क्यूरियोसिटी? ये भी उसकी क्यूरियोसिटी को मैंने पूछा, क्वेश्चन किया, उसकी क्यूरियोसिटी को मैंने प्रोब किया और उसकी क्यूरियोसिटी को मैंने जवाब देने की कोशिश की। रिमेंबर, चिल्ड्रन इमिटेट फार मोर देन दे ओबे। ये है पेरेंट्स का। पिलर 4, अब स्टूडेंट्स की बारी। तैयार हो स्टूडेंट्स? तैयार हो? यस और नो? आर यू लिसनिंग टू मी? Are you listening to me? Because I'm not coming again. Number 1 is building yourself, which is every student should become the CEO of their own life. Own life. You are the chief executive officers of your own life, taking your own responsibility for many things on your own. Parents को कहने की जरूरत नहीं है, तुमको समझ है, जब इतना कुछ कर सकते हो तो वो भी समझ है, लेकिन वो समझ को ऊपर बढ़ानी है। तो उसमें क्या करना है? एवरी स्टूडेंट डेवलप डेली दीज फॉलोइंग हैबिट्स, जो मैं बताऊंगी आपको। हेल्प समवन, पहली हैबिट, किसी की मदद करो, रोज किसी की मदद करो। ढूंढो, मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, पोलाइटली भी किसी को खुश करके, थैंक यू बोल के, कोई ना कोई मदद करो। अपनी फ्रेंड की मदद करो। पता नहीं, मदद का मौके बड़े मिलते हैं। आते जाते हो, समाज में भी जाते हो, मम्मी डैडी के साथ हॉलीडेज में भी जाते हो, घर में भी रहते हो। हेल्प समवन। जब जैसे हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ थी ना, हम लोग दान देते थे जाके, बड़ा कुछ करते थे। लेकिन हेल्पिंग समवन इज वेरी, हेल्पिंग घर में भी, यू कैन डू हेल्पिंग समवन एट होम ऑल्सो। घर में भी आते जाते रहते, कोई बीमार होता है, उसके नर्स बनो। मैं स्कूल से आके, मम्मी पापा डैडी दादी जी, मैं आके आपकी मदद करूंगी, आप मुझे बताओ कितने बजे मैं आऊं आपके लिए। ये घबराओ मत कि मेरा होमवर्क रह जाएगा, होगा। लेकिन हेल्प समवन, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन। ये नहीं रोज रोज ही जाना, यही look out for an opportunity to help someone. Secondly, exercise your body. तुम गारंटीड ले रहे हो कि तुम क्योंकि छोटे बच्चे हो, जवान है, आपके सारे बड़े बॉडी के ऑर्गन्स फिट हैं, उनको फिट रखना है, इसलिए एक्सरसाइज रोज करनी है। पता नहीं योगा स्कूल में कितनों के लिए करते हो, कलेक्टिवली करते हो कि नहीं, एक्सरसाइज करते हो, पीटी करते हो। एक्सरसाइज इज अ मस्ट, और ये एक्सरसाइज की हैबिट जिंदगी भर रखनी है। जब ऐसी आदत पड़ जाएगी, ये लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी। फिट रहोगे, पतले रहोगे, सुंदर रहोगे, हेल्दी रहोगे, डॉक्टरों से दूर रहोगे, दवाइयों से बचे रहोगे, आपके वो सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, लाइफ लॉन्गर होगी, दूसरों पे बर्डन नहीं बनोगे। So exercise everybody, and exercise is excellent when you play every day. So खेलना रुचक, मौका जब मिला खेलना, मुझे रोज खेलना है। मैंने खेले बिना घर नहीं जाना, रोज खेलना। मुझे कौन सी गेम खेलनी है उसके लिए पीरियड होना चाहिए, और उसके साथ जब वो खेले तो टीचर्स भी खेलें साथ में, टीचर साथ साथ खेले, टीचर्स भी ट्रैक सूट पहने, आप भी ट्रैक सूट पहने, एक स्पोर्ट्स का आवर लगाएं। इतने सारे ग्राउंड हैं आपके पास, इतनी भगवान की कृपा है, और ये ग्राउंड को खाली रख सकते हैं कहीं? जब तक सूर्य डूबता नहीं खेलो, जब तक सनसेट नहीं होता खेलो। खेलने का टाइम, घर जाने का टाइम नहीं है, घर जाने का टाइम नहीं है, ना टीचर का ना स्टूडेंट का। खेलना है, टीचर ने भी खेलना है, उसको भी फिट रहना है। ये कैसे करेंगे आगे बताते हैं, सोचते हैं। लेकिन खेले के बिना, जब तक आप खेलने में मजा, और जब आप खेलोगे, गिरोगे, उठोगे, रूल्स को समझोगे, एक दूसरे का मदद करोगे, असली दोस्ती बनेगी। यही तो दोस्ती आपकी जिंदगी भर काम आएगी, पता नहीं कैसे कैसे काम आएगी। लेकिन ये एक, और तीसरा मैंने कहा ना 3 दूंगी। तीसरा है रिफ्लेक्ट बिफोर स्लीपिंग। तुम भी सोने से पहले 5 मिनट बेड पे बैठो, फटाफट सो गया बहुत नहीं, 5 मिनट बैठो, आज मैंने अच्छा क्या किया और आज मैं बेटर क्या कर सकता हूँ।
रिफ्लेक्शन की आदत सिखाई जाएगी, लेकिन तुम खुद प्रैक्टिस करोगे जब आप घर जाओगे और अपना सुबह रात को उठ के अपना लेखा दोगे, अपने मार्क्स दोगे. यू विल गिव मार्क्स टू योरसेल्फ. आज मैं 10/5 दिया, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने ये ठीक नहीं किया. तुम खुद अपने आप को देखोगे. मम्मी डैडी नहीं इंस्ट्रक्शंस देंगे, टीचर नहीं देंगे, क्योंकि यू अलोन नो योरसेल्फ. नोबडी नोज योरसेल्फ. तुम जो अपने बारे जानते हो, मैं और मम्मी नहीं जान सकती. कई बार कुछ चीजें आपको ही पता है, कुछ तो बातें आपने शेयर कर दी तो बात हल्की हो गई, और अगर ने गाइडेंस ले ली तो भी इजी हो गया. तो रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. किसी दूसरे के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है. आपने अपने आप के साथ कंपीट करना है. तुम इसके साथ कंपीट करते हो, इसके साथ कंपीट करते हो, नहीं नहीं, मैं कंपीट तुमसे नहीं करना है. मुझे तो अपने आप से कंपीट करना है कि मैं और बेटर क्या कर सकता हूं. सो आई विल असेस माई सेल्फ एंड आई विल कंपीट विद माई सेल्फ टू डू बेटर एंड बेटर. एंड दैट इज वंस लाइफ स्किल which lasts with you for all your life. You will keep growing, keep staying fit and young all your life, and progressive and productive and self growth mindset rahega. When you are doing this, there's a growth mindset. This has no age bar. Growth mindset has no age bar, friends. Growth mindset has no age bar. Growth mindset is only when you stop growing. You are only growing in age, but if you continue to grow in mindset, age may keep growing in ages, but you will continue to grow. And when we pass on, when we breathe the last, we will go with a growth mindset, not a complaining mindset, not a dukhi mindset. Okay, so here is the students को मैंने बता दिया 3 points. इससे ज्यादा नहीं और बताने की जरूरत. अगर 3 में से एक भी याद रखें तो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी चीज है. अब मैं 4 एग्रीमेंट्स कह रही हूँ. 4 एग्रीमेंट्स जो स्कूल को, नंबर 1, फिर मैं टीचर के लिए एग्रीमेंट, फिर मैं एक पेरेंट के लिए एग्रीमेंट और एक स्टूडेंट के लिए एग्रीमेंट. सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट every stakeholder which I've talked about should make one promise, and that one promise for school is we will never compromise on values. Your one promise is we will never compromise on values. Automatically, you will continue to promote values, talk values, reward values, recognize values, study values, and show value-based films. You'll show biographical films. What a lovely auditorium. You have a cinema hall here. Biographical film, value-based, everybody should sit in the auditorium. अगर स्टूडेंट की नंबर कम हो जाती, सीढ़ी पे भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, लेकिन फिल्म देखनी है. Biographical film which is value-based, film of the month. उसको बंद कर दो. So basically school के लिए, every school should be never compromise, but now it's not never, positively promote values. And biographical films today are abundant. Well, they should all know Vivekananda. They should all see Gandhi. They should see Shastri ji. ऐसी बहुत सारी फिल्म. They should see सरदार पटेल. ये भूल चुके. 1-2 पेज पढ़ने से नहीं पता चलेगा. फ्रीडम फाइटर्स का ले लो, ऑथर्स का ले लो, साइंटिस्ट का ले लो, अब्दुल कलाम जी की भी है. ऐसी एक फिल्म ऑफ द मंथ जो कि उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे. So when you do this, so you will, one promise agreement is for school is promote values. Teachers, एक promise teachers का, we will inspire before we instruct. So instruction शुरू से करने से पहले इंस्पायर करूंगी अपने बच्चे को. आज मैं कुछ नई थॉट लेके आऊंगी, कुछ नया विचार दूंगी बिफोर आई स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग. So that means you will self-inspire before you come to teach, take the class. पहले अपने आप को इग्नाइट करोगे, अपने अंदर रोशनी डालोगे, अपने में खुराक डालोगे, कोई नोबल थॉट डालोगे, एंड टीचर स्टूडेंट्स वेट करेंगे. आज देखते हैं मैम क्या देती है, आज नई इंस्पिरेशन. सो नो क्लास स्टार्ट्स विदाउट इंस्पिरेशन. Every teacher comes with a red inspiration.
everything. And those are the things they start reflect. That is instilling values. Because wo sunte. These children of such a great school, of such a heritage, of such ancestry, and such reputation should stand out both professionally and personally. Professionally तो इन्होंने stand out करना ही करना है, मगर एक इंडिविजुअल्स भी बनेंगे जो कि नेतृत्व लेंगे जिस देश इस देश को जरूरत है ऐसा। और इसलिए स्टारवेशन हो रही है क्योंकि ये हमने सीडिंग नहीं की है, हम सिर्फ प्रोफेशन पर ध्यान रख रहे हैं, करियर प्लानिंग पर और प्लेसमेंट पे और इसकी मनी कितनी आएगी, लेकिन तुम इंसान कितने हो अंदर वो भी बताओ ना। वो आएगी उसकी प्लेसमेंट में भी आएगी, इंटरव्यू में भी आएगी, सब काबिलियत में भी आएगी, जिंदगी को भी संभालेगा। तो स्कूल का तो मैंने बता दिया, टीचर्स को भी मैंने बता दिया, दे विल इंस्पायर बिफोर दे इंस्ट्रक्ट। थर्ड, पेरेंट्स के लिए वी विल सपोर्ट विदाउट सफोकेटिंग चिल्ड्रन। आप सपोर्ट करोगे, सफोकेट नहीं करोगे बच्चों को, सुनोगे, उनको ऑक्सीजन दोगे, उनको आप भी इंस्पायर करोगे, उनको उनसे डिमांड नहीं करोगे, उनको इनकरेज करोगे, सफोकेट नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, इफ पेरेंट्स कैन ऑल्सो लुक एट, यू कैन चूज, बट एक जगह सफोकेशन नहीं, चिल्ड्रन शुड फील फ्री टू ब्रीथ एंड सिट एंड डू ब्रीदिंग विद यू। मेरी माँ सुनेगी और मुझे झाड़ नहीं मारेगी और मेरी बात सुन के मुझे बता देगी, लेकिन माँ तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने इतना कुछ बताया, मम्मी कुछ तो बोलो। बताऊंगी बेटे, सोच के बताऊंगी। वो भूखा हो बच्चा आपकी माँ की इंस्ट्रक्शन के लिए, ये नहीं आप तो बोलते ही रहते हो। नहीं, तूने मेरी बात बता दी बेटा, अब मुझे भी सोचने दे, मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि मैं तुझे वो बताना चाहती हूँ जो तेरी सारी जिंदगी काम आए, क्योंकि मैंने तो चले जाना है किसी टाइम पर, ये सोच तो तुम्हारे दिमाग में ही रहनी। तो बेटा मैं वो बताऊंगी तुम्हें, डैडी बताऊंगी बेटा, जो कि आपके सारी उम्र आपके पास रहे और तुम बड़ा हो के ये कहो मेरे पापा ने ये मुझे कहा था। मेरे पापा ने मुझे एक चीज कही थी जो मेरी अभी तक याद है और मेरी जिंदगी के साथ अंग संग रहती है। मेरे पापा ने कहा था, किरण बेटा याद रखना, लाइफ इज ऑन एन इंक्लाइन, यू आइदर गो अप और यू कम डाउन। लाइफ इज लाइक एन इंक्लाइन, आइदर यू गो अप और यू कम डाउन। अब गो अप चीटिंग करके जाना है, तरीके से जाना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन जब तुम सोचना ग्रोथ माइंडसेट खत्म हो जाते हो, सीढ़ी तुमको नीचे खिसकाने लग जाती है। और जब आपका ग्रोथ माइंडसेट रहता है, एथिकल है, वैल्यू बेस्ड है, स्किल्ड है, तो आप क्लाइंब करते रहते हो। उस वक्त उम्र नहीं फर्क पड़ती, 77 हो के नहीं, आपका ग्रोथ माइंडसेट रहता है। सो मेरे पास वो चले गए, मेरे पास छोड़ गए, मेरा मंत्र यही लाइफ का। इसलिए मैं रोज उठ के काम करती हूँ, रोज उठ के पढ़ती हूँ, रोज उठ के योगा करती हूँ, रोज उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, रोज उठ के दूसरे के काम आती हूँ, रोज किसी के काम आने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मुझे जानो, लेकिन मेरी आदत है कि अगर मैं ग्रोथ नहीं की तो मैं डिक्लाइन हो जाऊंगी। पब्लिसिटी के लिए भी नहीं, अच्छी बात है तो कोई प्रॉब्लम आती है टेलीविजन पे अगर मुझे जब बड़ा मन होता है तो बता देती हूँ, नहीं होता नहीं बोलती, लेकिन होता है तो बोलती हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है एज अ नागरिक, एज अ conscientious citizen to let them know whether somebody likes it or not. It doesn't matter to me. मैं किसी की के नीचे डिपेंडेंट नहीं, सिक्योर। सो दिस हर एक का आप भी ऐसा उसको बच्चे को दो एक मंत्र, जैसे मैंने आपको बोला मेरे पिता ने मेरे मंत्र दिया, आपको भी दे दो, ये मेरा बेटा मंत्र है। बड़ा होके वो भी खड़े होके स्कूलों में ऐसे बोलेगा कि मेरे डैडी ने मुझे ये दिया। पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ये है, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है ये। हाँ, वी विल स्ट्राइव, चिल्ड्रन के लिए वी विल स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस विद इंटेग्रिटी। यू आर स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मीन्स जो भी पढ़ रहे हो दिल लगा के पढ़ना है, ताकि मैं इसका मास्टर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं। इट्स टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन नॉलेज, इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉट रोट लर्निंग। दैट मीन्स यू रिसर्च मोर, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता जाए, यू बिकम योर ओन टीचर, बट विद इंटेग्रिटी। तो आप भी कभी आपको कहे नहीं इसको ये शॉर्टकट करो, ये शॉर्टकट को नहीं,
I'll go with integrity. Oh, you outdated. I'm not outdated. I'm life dated. I'm living long. I'm planning my next 50 years now. I have to live a long life ahead based on integrity. And lastly, my closing message is the true measure of this school will not be how many doctors, engineers, entrepreneurs, judges, or civil servants, or army chiefs, or police officers. It will be how many honest professionals, compassionate leaders, responsible citizens, and good human beings it produces, it accepts. So, how many good human beings it sends into the world? This school कितने अच्छे इंसान इस दुनिया में छोड़ता है, पंजाब में छोड़े या दिल्ली में छोड़े, दुनिया में कहीं पर भी जाए, वो stand out करे out of for excellence. If every stakeholder, the school, the teachers, the parents, and students accepts this shared responsibility, success will not merely be achieved, it will be deserved. It will not be achieved, it will be deserved. We'll have earned it. We will have earned it, friends. I thought this is what I thought for you today. पता नहीं क्यों रूटीन की बात करने को मन ही नहीं किया था जब मैं आपके बारे सोच रही थी, इसलिए मैंने बहुत सोचा और सोच के मैंने आपको बताया. आपको जरूरत से ज्यादा जिम्मेवारी अगर दे दी है तो माफ करना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने आई हूं और दोस्ती भी निभाने आई हूं, क्योंकि दोस्त ने बुलाया, इसको कहते हैं ईमानदारी की दोस्ती. Thank you, Amarjot, and thank you, the school, for inviting me. And thank you, parents, for listening to me. Thank you.